startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. If you put it in basic terms, AI है क्या? AI इंसान का और गूगल का एक समराइज फॉर्म है. गूगल में और चैट जीपीटी में फ़र्क क्या है? आपको पेज बाय पेज या लिंक बाय लिंक देखना ही नहीं है. इट्स अ प्रेडिक्टर ऑफ व्हाट यू माइट नीड. बूम, फिनिश्ड. It used to be a saying that you're only limited to what you can imagine. Now AI actually gave you the tool in your pocket which will fulfill that. Online jobs and remote work was a very, very alienated concept. The world is not moving in your pace. आपको अपनी किश्तियाँ कभी कभार जलानी पड़ती हैं. जितनी जल्दी आप समझ लें उतना वो बेहतर होता है. लिटरली आंखों के सामने है. 50 मिलियन तो खैर कहीं ना कहीं टेक में जॉब्स जो हैं कि ये गई. आज की मेरी एक फेसबुक पोस्ट का वो रीच नहीं है जो 2 साल पहले थी. जितने भी लोग हैं जो अभी भी समझते हैं कि नहीं यार, हम जो है ना वो लोएस्ट स्किल ऑफ रेट में बैठे हैं जहाँ पे लेबर चीप है. बिल्कुल चीप है, पर उस लेबर की ज़रूरत होगी तब आप कुछ काम कराओगे ना. पीपल हु आर इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव रियली नीड टू पुल अप देयर सॉक्स. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद Allahwala है. Back with another podcast with a very special guest. This guy is very important in Karachi ki society. He is actually the guy who used to be at the role at where I am now. मतलब अगर मेरे रोल की कोई इम्पोर्टेंस है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इनका है. जो मैं एज ए डायरेक्टर स्टार्टअप ग्रैंड का एक्ट करता हूँ. Fawaad Saleem is the guy who started these networking events in Karachi. Startup का नाम लोगों को पता होने में इनका बहुत बड़ा हाथ है. और I'm sure उस वक्त तो कैसे लोगों को बताते थे स्टार्टअप क्या है. This is the time when in 2013 I was running a digital agency, still am. और हमारा US का कस्टमर था, सॉरी US का नहीं, दुबई बेस्ड क्लाइंट था. They raised a funding round, don't know what, millions. उन्होंने रेज करा. हमें उनके साथ, हमें उनके लिए PR करनी थी UAE में, और सो यू नो द गल्फ न्यूज़ और एमिरेट्स और फिर अरब न्यूज़ एंड देयर सो मेनी ऑफ यू नो टेक स्टार्टअप्स जो वहाँ पे मैगजीन्स और वो सब करते थे. एंड देन देयर वाज स्टार्टअप ग्राइंड दुबई चैप्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड बीइंग एन एजेंसी का, मैंने कहा यार इनको यहाँ भी करवा देते हैं इंटरव्यू और अपने भी पैसे बना लेंगे, और जो है ना वो इनका ये भी खुश हो जाएंगे, हम भी, हमारा भी काम हो जाएगा एज एन एजेंट. तो मैंने वो दुबई वाले चैप्टर को ईमेल डाली. मैंने कहा यार इनको बुलाओ, इनको जो है ना वो क्या कहते हैं, कॉल देम इन एंड दिस इज अ रियली कूल स्टार्टअप दैट यू गाइस शुड बी interviewing. Okay, they never replied. I never. दुबई ने रिप्लाई नहीं किया. नहीं, साइमन at that time होता था, नहीं रिप्लाई करा या करा, I don't remember at that point in time. And then उर्दू में बोल दिया कि वो सुनना ले. उर्दू में बोल दिया सुनना लेना. हाँ, तो खैर, so at that point in time, that was the main objective. The objective was never to have a chapter here, to do all this stuff. अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैंने कहा चलो यार ये तो बड़ा कूल है जी, लंदन में भी है, यूएस में भी है, इधर भी है, उधर भी है, इनको हम, अच्छा यू नो आई नेवर शाइड अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड कोल्ड ईमेल्स एंड what can you lose, right? You've nothing to lose, right? So मैंने डायरेक्ट, उस वक्त डेरिक इज द फाउंडर, डेरिक को मैंने ईमेल करी, फ्रांसिस्को होता था, उनको ईमेल करी. मैंने कहा आई वुड वांट टू लव टू यू नो रन अ चैप्टर इन पाकिस्तान. द इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज नहीं यार, मतलब पाकिस्तान, नो 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 वे. तो दैट वाज द इमीडिएट चैप्टर, द रिस्पॉन्स ऑफ डेरिक. चलो ओके, हाँ, इट वाज नेवर टू फास्ट, यू नो, मतलब टिपिकल वेस्टर्न मेंटालिटी. and then that is when they were
connecting with Google for Entrepreneurs. And Google for Entrepreneurs was very, gun-go on markets like Pakistan. I said, and then he comes back, yeah, we want to do it in Pakistan. So, that's how we started off. It was completely off. मतलब उसने Google for Entrepreneurs ने उसको बोला, उसने कहा हाँ ठीक है, मुझे बोल दिया, अब मुझे आ भी गया. अब मैंने कहा अबे यार अच्छा, ये तो काम कभी करा नहीं, ये काम किस तरह करते हैं, इवेंट किस तरह करते हैं, इवेंट कहाँ करते हैं, बुलाना किसको है. And this is freaking 2013, right? This is 10 साल. This is not as now where you have people editing and you have, so you don't have YouTube. You need to remember block हुआ था ना, YouTube was blocked, right? So आप ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जब आप VPN लगाकर YouTube देख रहे थे. So मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब नाउ स्टार्टअप ग्राइंड तो कर लिया, अब समझ में ना आए क्या करें भाई, ये करेंगे कहाँ पे. So naturally, being a very avid user of Facebook, I went on Facebook and I put it out there on Pakistan startup का एक community होती है, डाला, लोगों ने connect करा, सारी चीजें करी. And I met Haseeb, probably the earliest days. He was running Startup Weekend at that point in time. अच्छा हाँ, पहले वो भी तो थे. He's in the US now. Haseeb connected me to Farzal Tochki, not knowing Farzal at all. And I end up at his office and I'm like, yaar, मैंने ये कर लिया है, ये करना है, would you be interested? I'm like, हाँ, okay, let's do it. And not knowing him, so not knowing how to do an event. Farzal's office is .0. Farzal's office .0 came in very late. This is not even .0. This is his Tariq Road office. Achha. This is way back 2014, early days of 2014, maybe it was 2013, I don't remember. And I said, करना कहाँ है? उसने कहा, talk to Sabeen at T2F. And I go, okay, what's T2F? I'm like, I'm the guy who came from a corporate world, just started my agency, not knowing all this, right? So I go, yeah, T2F क्या है? मैंने कहा, अच्छा, okay. Went and met Sabeen. Yeah, what a woman. May Allah rest her soul. I said, okay, Sabeen, I want to do an event. I don't know kya kharcha aayega. And, and Farzal is one who recommended. And she said, yeah, just do it. Let's do it. And so, had the first event there. Ran Facebook ads, ये सारी चीजें आती थी. Did all that, created all those events. And we had a good 30-40 people at the first event. Achha. And who did you host? People, Farzal Dhojki. We had people from the US Embassy. Wow. Achha, that I didn't know that at that point in time, US Embassy was the go area ke yaar, you can go to T2F. So it was a brilliant event. It was a brilliant event. So started doing a lot of events for the Karachi startup grind. Went to the global conference. These सारी चीजें करी. And when you hear all these entrepreneurs and you hear their stories and you hear what they did, it was truly inspirational. We got Saleem Ghori, we got Yasin Paracha, we got Farhad Karam Ali, we got Farzal, we got the founder of Folio Tree. There's so many of them. I really don't remember. So that's how it started. It was never meant to be, right? That was never the objective. The objective was, दिमाग में वही था यार, अपना मुफाद क्या हो. But eventually it became a thing, and I connected with a lot of people. So that was a good thing in terms of getting out of your comfort zone. आप events नहीं करते, and events
on its own, and I'm sure you know, उसकी एक अपनी anxiety होती है just before the event, until it's done, until you are, you know, you went through it, it has that anxiety It does. to it. Once it's done, जो उस वक्त सुकून है. So सुकून होता है. And you know, I think a good event without an audience is not a good event. You need people, you need like-minded people, and you need the community. आप अपने लिए तो करते नहीं, ठीक है? You want people coming there, you want people to mingle around. I mean, we got Food Panda also. That was when they were Eat-Oy and then they turned to Food Panda. That was a brilliant story at that point in time. So yeah. So that's how we started Grind. Completely not meaning to do it, but did it eventually. And sometimes things happen which are not planned, and they turn out to be some of the most enjoyable parts. Yeah. So I don't think a lot of people are afraid to try new things, but I think this tells you कर लेनी चाहिए. So yeah. So you went to so you came from a corporate world, you went into digital agencies, startup grind भी किया, फिर छोड़ भी दिया. Of course with a good runway. मुझे हम आपके बारे में आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, I think it's after when I met you just last time, इतना आप AI पे फोकस कर रहे हैं और उससे बातचीत हो रही है. अभी भी हमने कोई घंटा तो उस पर बातचीत करी. आपके ख्याल से, if you put it in basic terms, I mean, I know you're not advocating for this, you're not getting paid for this, but in your own words, AI है क्या? AI इंसान का और गूगल का एक समराइज्ड फॉर्म है. You see what you get to see in terms of all these opinions which are already generated. Before we get into this, initially you talked about the corporate world and everything. मैं थोड़ा सा let me give you a quick background. So being a Delhi wala like yourself, right? यूनिवर्सिटी गए, पहले यूनिवर्सिटी से पहले सब पता नहीं था क्या करना है जिंदगी में, करना क्या है. कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी गए? IBA. So back in, and when was this? Freaking 2005 यार. 2005 में गए थे या छोड़ा था? खत्म. 2001 started. Oh my God. And 2002 की तो मेरी पैदाइश है. हाँ तो मतलब so you know, going back to the school age and going back to the college age, this is the world of cassettes, and this is the world of you know, eventually DVDs, but DVDs came out much later on. Yeah. So this is the world of where you were taught patience. This is the world where you were taught the movie would come out on a new Indian movie would come out on Thursday, and आप जो है ना वो देखेंगे, you need to book it, you need to wait for it, and then you would enjoy it, right? You would enjoy a new song of Junoon coming out, and you would have to wait for the television के यार वो song दिखाए. So a lot of हमारे अंदर बड़ा तहम्मुल और patience है as a generation versus today, and I'm going to come why I'm talking about this. And when going to the university, ठीक है यार, कहाँ जाना है, करना क्या, अभी जिंदगी का कुछ पता नहीं है क्या करना है. चले गए IBA. क्या करना है, फाइनेंस करना है, बैंकिंग में जाना है, मार्केटिंग करना है, अभी नहीं पता. चलो यार, let's do corporate finance and investment banking, and let's also do brand management and advertising and consumer behavior. Let's take a flavor of everything. That's how I would look into it. And then अच्छा चलो अभी last semester आ गया है, क्या करना है यार. Half of the world is going to the banking sector, and the half of the world is going to the FMCG sector.
and there's this one guy who's going to a technology company and you're like, यार तुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो इसलिए technology company जा रहा है. So this is very, this is 2005. So being a very early adopter of technology, my Gmail is Fawaad.Saleem, which it was literally an invite only Gmail at that point in time. So वो उस वक्त का Gmail है, right? Yeah. And I was always, I was fascinated by the eBays and the Amazon. मैं पढ़ता बड़ा था, मैंने कहा यार ये तो जो है ना कुछ है, इसमें कुछ करना चाहिए. Why don't we have an eBay in Pakistan? और ये सारे किस्से कहानियाँ दिमाग में चलते रहते थे during the university age. But you couldn't do anything about it. You didn't have a route to it, right? Okay, now जब आप एक भीड़ में होते हो ना, जब आपके साथ सारे दोस्त होते हो, सब होते हो, और जब आधी दुनिया बैंक जा रही होती है और आधी दुनिया FMCG जा रही होती है, तो आप वो ही करते हो. It's a safe choice. And it was a safe, nothing. So I went to Dalda Foods as a brand manager. 2 साल वहाँ काम किया. अच्छा था. पूरा पाकिस्तान देखा. My boss, my first boss, brilliant guy. He asked me, where have you traveled in Pakistan? I said, Karachi, Lahore, Islamabad, Nathia Gali, and Mari. Okay. इसको कल बस पे बिठाओ और इसको कराची से लेकर के जो है ना पेशावर में जो आपका खैबर पास से आगे जाके नमक मंडी और बिल्कुल बॉर्डर वहां तक भी भेजो इसको. So Which company was this? This was Dalda Foods. This was back in 2006, 5-6. And I would go with the sales guy and I would, look at every retail outlet and I would see count. And that's what opened up my mind कि हाँ यार, Pakistan is not just KLI. It's freaking huge and the language, आप जैसे ही निकलते हैं कराची से, आप हैदराबाद जाते हैं, आप हैदराबाद से सदर्न पंजाब जाते हैं तो सराइकी होती है, सराइकी आगे जाते हैं तो सराइकी चेंज होती है, फिर पंजाबी आती है, फिर it is a completely dynamic nation and you are in your silo of being a Karachiite and you don't know how this operates. And then as you travel, right, this happens when you travel in Pakistan or outside or go anywhere, the perspective completely changes because the only perspective you're given is from the media. So did a corporate job. वहाँ मज़ा नहीं आया. मैंने कहा यार कुछ चक्कर है, maybe it's job. नहीं, चलो कहीं और जाते हैं. पहले तेल बेच रहे थे, फिर बिस्किट्स बेच रहे थे, कॉन्टिनेंटल बिस्किट गए, वहाँ भी मज़ा नहीं आया. So I was looking for जिंदगी से करना क्या है, right? 9 to 5 नहीं करनी, that was decided. And जब when you are not motivated to go 9 to 5 में गए कैसे? आप दिल्ली वाले हैं यार. नहीं समझ में आ रहा था ना क्या करना है. जब नहीं समझ में आ रहा, देखिए आपने डिग्री कर ली, आप देखिए जो आप सीखते हैं ना किसी और के पास जाकर, किसी और के पास काम करके जो आप सीखते हैं ना, वो अपने काम में नहीं सीखते. बात तो वैसे ठीक है, सही है. जो आपके बाप या चाचा या ताया डांटेंगे ना, वो घर में झगड़ा हो जाएगा. जब आपको कोई बाहर वाला डांटेगा ना, आपको बोलेगा जा बेटा ये जाके डब्बे गिन कर आ, आप कुछ नहीं करेंगे. सही है. वो आपको सुबह भेजेगा, जाओ लाहौर जाओ, शाम में वापस आ जाओ, अगले दिन फिर जाओ, फिर आपको पता चलेगा. आपको एक्चुअली you would appreciate when you do it yourself. So वो appreciation नहीं आती. So coming back, did that, and this point in time I was like यार क्या करना है. So my mom had a big role on this. He said yeah, why don't you look into elans. Elans क्या होता है? This is 2015-16 now. elans याद है. Again अब elans नहीं है. अब नहीं है ना, वो अपवर्क ने खरीद लिया ना. अपवर्क ने उसको भी खरीद लिया, फ्रीलांसर को भी खरीद लिया, सबको खरीद लिया. हाँ. So I said okay ठीक है देखते हैं. मैंने जाके वहाँ डाली. वहाँ भाई हमने
2-4 प्रपोजल डाल दिए, एक लग भी गया। ठीक है, वो रिसर्च का प्रोजेक्ट लगा कि यार आप रिसर्च करेंगे, सारी $500 से। मैंने कहा $500 बड़े पैसे हैं यार, वेरी गुड यार, ओके यार, ये तो तकरीबन मेरी तनख्वाह हो गई, नॉट इफ नॉट। फिर हमने करा, फिर एक और मिल गया, दिस इज ऑन द जॉब, सो यू नो, सुबह जॉब, शाम में ये। यार वेरी गुड यार, ये तो अच्छा काम है। हमने फिर जो है वो, मैंने कहा यार ये तो अच्छा, नाउ दिस इज नॉट सीरियस राइट, दिस इज me working on the job, thinking about it, and then doing the same thing, and event not thinking कि यार एक proper चीज बन सकती है, like side hustle. Then this another company comes up and says, yeah, we want to launch a complete product, and we need an SEO guy and social media guy and this and that. And this is, now you need to understand, not 20, this is 2008, 2006, 6 to 8. Very early days of you getting content and, you know, you learning something off from YouTube or Coursera or whatever. So it was a lot harder, right? Like, hire kar lenge, masla kya hai? So being part of, you know, being coming from an college, a university, so communication was not a problem. Making a sexy ass presentation was never a problem. Making a nice proposal was never a problem. but काम आना भी चाहिए ना. अब आता तो नहीं है, अब बना लिया जी, $2000 का प्रोजेक्ट भी मिल गया बैक इन 2000. अब क्या करें? कोई बात नहीं, हमने भी जाके एक पोस्ट लगा दी कि यार ये चाहिए. एक लाहौरी बंदा मिला जो इवेंचुअली दोस्त बन गया बाद में, उससे कहा हम कर लेंगे यार. मैंने कहा ठीक है भाई, तू कर ले. हमने उसको $500 में काम दिया, 2000 वहां से पकड़े. अब काम शुरू हो गया. Now you need to understand, no client is stupid, right? If he's paying $2000 at that point, he knows his shit. अच्छा, अब मैंने कहा यार, मैंने कहा फवाद मियाँ, दो काम एक साथ नहीं हो सकते. ये $2000 है, ये तो उतने ही पैसे हैं जितने मेरे बॉस के हैं, GM के हैं ना, उस वक्त तो अच्छे पैसे थे. So मैंने कहा let's resign, let's take a leap of faith, let's resign. And this is me already married, having twin daughters who are 6 months old. 2000, no, this is 2009. Okay. 6 months old. मेरी बेगम कहती है, are you mad? Are you crazy? मतलब ये हलाल है हराम है? क्योंकि नहीं था ना. You need to understand. You're right. Online jobs and remote work and working off the internet was a very, very alienated concept. You would not understand it. It was not like it's right now. It is now. It's, you know, it's a every home discussion कि यार ये काम करना है. That was not the case. So मैंने कहा ठीक है, let's take a leap of faith. You know, you need a leap of faith. You need to take that risk. I go to my boss. He says, Fawaad, do you know how many people strive for the job and the title and everything you have? मैंने कहा या. तो मतलब he tried to put sense in me. मैंने कहा भाई, मैं नहीं करना तो नहीं करना. मतलब देखें, you need to, आपको अपनी किश्तियाँ कभी कभार जलानी पड़ती हैं. आपको अच्छा लगे ना लगे, you need to do that. Took that leap of faith. That client knew कि we don't know shit. 1 महीने में उसने फारिग कर दिया. ठीक है, वो लॉन्च हुआ नहीं हुआ मुझे आज तक जिंदगी में नहीं पता कि वो काम गया, पता नहीं क्या था. I was some lawn mower robot technology. I don't know क्या था, कुछ कोई प्रोडक्ट था. I don't know. That's irrelevant. So वो करा, निकले. मैंने कहा ठीक है, अब तो कर लिया, अब करना ही है. तो हमने कुछ जो है ना वो फिर बिडिंग शुरू करी. कुछ इधर से आया, कुछ उधर से आया, कुछ करा. मतलब करते करते टुक 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 करते करते एक एजेंसी बना ली. where we started working with the proctors of the world, the startups of the world, the SMEs of the world.
So, we started doing all sort of shits. From the early days of selling page likes to selling reach to doing long forms of content to doing short forms of content to doing 30 seconders to doing 15 seconders to now talking 5 seconders, right? That's how the agency world started. And during that, there is a, I don't know, एक मेरे साथ अच्छा आपका सवाल कुछ और था और हम कहीं से कहीं निकल रहे हैं. I don't know if that's okay. There's in my journey there's always a problem. I don't know if that's a problem or that's good. मुझे हर वक्त जो है ना, हर 2 साल बाद मुझे एक रिफ्रेशर चाहिए होता है in terms of what we are doing. The problem with the agency world or with the advertising world or with any service is that it doesn't scale. आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, जितनी जल्दी आप समझ लें उतना वो बेहतर होता है. क्योंकि it's very important to make goals and objectives in life, and when you make those goals and objectives and you realize okay मैं ये अभी कर रहा हूँ, 5 साल बाद मैं क्या करूँगा और 10 साल बाद मैं क्या करूँगा और 20 साल बाद मैं क्या करूँगा. If the answer is the same, then there's a problem. If you're doing the same shit you're doing 5 years ago and you're doing 10 years ago and you want to do it 20 years ago, then it's serious. It's a serious problem, because that's not how the world is not moving in your pace. The world is moving at 100x right now. So मैंने कहा यार क्या काम करें. मैंने कहा भाई let's look at global companies जो इंडिया में है, जो दुबई में है, जो सिंगापुर में है, बट पाकिस्तान नहीं आती. Let's look at those companies and let's talk to them. Yeah, we'll be your sales and support here and we'll take a commission off of you, or we work on retainer or something, and I'm sure you have some customers. So Shutterstock was one of those companies we started working with. हमने कहा यार हम आपके साथ काम करेंगे, सेल्स भी आपकी करेंगे, सपोर्ट भी आपकी करेंगे. We are your go-to in Pakistan. And they were okay with it because, there's such a shit small number. ठीक है कर लो. So, being part of the agency world, we knew all the agencies, we knew the production houses, we knew the maid. We connected with everyone, made a killing out of it. And that's what made us realize कि यार, I think in order to scale, you need other avenues than just selling a website or just a social media page. So, doing that, we moved towards Alibaba and became a channel partner with them. Channel partner हमने करा, but वो primarily, I think, due to COVID, didn't work out. COVID happened, things just rock bottomed. And then we started working with a lot of e-commerce sites and did a lot of other things. So coming back to your question about now you're doing what? So in the last 2-3 years, I was focusing more on, so when we were doing Alibaba, हुआ क्या कि export से ज़्यादा जो है ना, हमारे पास inquiries आती थी of small and medium sized businesses. यार हमें ये चाहिए Alibaba से, ये चाहिए AliExpress से. We had customers, we had audiences in Rahimya Khan, females, जो घर से बैठकर Instagram page चलाती थी, या ख़वातीन जो Facebook live करती थी. उस तरह के हमारे बहुत सारे आते थे जो कहते थे हमें जो है ना चाइना से माल चाहिए और वो बेचना है, or we don't know how to source it. So one fine day, we were sitting, and this is the time, जब आप एजेंसी में कर रहे होते हो ना, जब आप बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, आप कहते हो क्या बकवास है यार. If I had his business, I would have done it so much better. Because at times they don't listen, and at times they don't understand, and you're like, okay, they don't want to do it Sanuki. So, I
wanted to move from the services to the product side. So हुआ क्या कि 2019 में I was thinking क्या करना है, and when we were doing Alibaba, this problem would, every other call the customer support would have is, यार नहीं एक्सपोर्ट तो नहीं करना हमें, तो मुझे तो इम्पोर्ट करना है, यार मुझे मशीनरी चाहिए, मुझे फलानी चीज़ चाहिए. मैंने कहा ओके, दिस इज अ बिगर ऑडियंस और मुझे जो ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करनी है, बट आई डोंट नो. एंड दिस इज जस्ट बिफोर कोविड. People are understanding that e-commerce is there, it's going to get bigger, and they need sourcing. Now, if you can source locally, you can source from Bolton Market and you can source from Saad and everywhere, but you don't make those margins. So, and AliExpress deliver karta tha, but AliExpress cart se karta tha. So, yeah, Pakistan is a predominantly cash on delivery industry. So हमने कहा, we said let's work on this. It's a good problem to solve. देखते हैं क्या होता है. एंड तफरी में एक वेबसाइट लॉन्च करी जिसका नाम था बशीर भाई. उसको लॉन्च करा. चाइना में जो है ना वो परचेज एजेंट और वेयर हाउसिंग और ये सारी चीज़ें सेटअप करी. और यहाँ पे एक वेबसाइट में सिर्फ सिंगल पेज वेबसाइट, जस्ट अ फॉर्म, नाम, पता, क्या चाहिए, URL, कितने पीस चाहिए, क्या कलर है, क्या साइज है, सबमिट, ऑल टू इट, राइट. एंड ब्लॉगर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को तो जानते थे, कैंपेन्स भी करते थे. मैंने कहा यार ये भी डाल देना, इसके ऊपर वीडियो बना देना. भेज दिया. नॉट रियली thinking the operational side of the business, just thinking कि हाँ यार, let's see. That video got us 10,000 people coming in the next day on the website. Wow. ठीक है, and it crashing on the next day, and we had 1,500 plus inquiries, and that same day we had to move from a shared shitty hosting to a VPS के ये तो जो है ना this serious shit. और we had to scale a team from 0 to 3-4 customer support guys, and then a finance guy, and then someone to manage purchases and everything. मतलब 3 दिन में 4 दिन में जो है ना एक बिजनेस खड़ा करना पड़ा जिसका आपको पोटेंशियल नहीं था. तो हमने वो करा, कैश ऑन, कुछ पेमेंट एडवांस ली, कैश ऑन डिलीवरीज करवाई, सारी चीज़ें करवाई. इट वर्कड आउट ब्रिलियंटली. और फिर वो करते गए. इवेंचुअली पोस्ट कोविड में बंद हो गया. पोस्ट कोविड हमने जो है उसको प्राइमरीली फॉर SMEs एंड प्राइमरीली फॉर एंटरप्राइज कस्टमर्स के ऊपर फोकस करा. एंड प्राइमरीली द फोकस वाज टू इनेबल एंटरप्रेन्योर्स. आपको एक ई-कॉमर्स साइट चलानी है, आपको घर से बैठ के इंस्टाग्राम पेज चलाना है, लेट्स बिकम योर सोर्सिंग पार्टनर. नाउ वी काइंड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन shipping from China to the US for Amazon and Amazon warehousing. That's what we are doing right now. Pakistan नहीं मंगा रहे अभी. Pakistan, because currently the situation of import is very different. So we're like just moving goods from China to Amazon. That's what we are doing, and focusing on the US market. When something happens, एक चीज जब आपकी ये नवंबर दिसंबर में यहाँ पे सिचुएशन हुई, it gave me a lot of chance to look into new things. And I think the moment ChatGPT came out, that's when I started thinking कि ये तो जो है ना, there are a lot of people जो फारिग होने वाले. सही. फारिग हो गए हैं. वो फारिग इसलिए होने वाले हैं क्योंकि देखें as a be it, and we've seen this news for the longest time, be it the Facebooks who are downsizing right now, Google who's downsizing, everyone who's downsizing, who for the longest time, which I've never understood, is that they've always been more pro
daily average active users and monthly active users without the top and bottom line. That's not how it works. Okay? You need to have a top line. You need to have a bottom line. For any business, efficiency and effectiveness is very important. मेरे पास अगर एक रिसोर्स है जो 8 घंटे काम करती है और 160 घंटे काम करती है, मैं उसका देखता हूँ उसका आउटपुट क्या है. आर दे एफिशिएंट? वो मुझे ज़्यादा काम कम टाइम में देते हैं. एंड आर दे इफेक्टिव? क्या मेरा कस्टमर खुश है? सही है. that's at the end of the day that's the goal, right? If that goal is not met, और बार बार आपको जो है ना वो बैक एंड फोर्थ हो रहा है और इनएफिशिएंसीज हो रही हैं और लोगों के मूड स्विंग्स हैं. As a human, you have your access baggage, right? Versus a chat GPT जो आपको एक blog article भी लिख कर दे दे, आपको पूरी बुक की outline बना दे, आपको test paper, you name it. And there's so many things that you can do, and take chat GPT and take Midjourney and create creatives out of it. And I really think people who are inefficient and ineffective really need to pull up their socks. So coming back to the original question, in 30 seconds, so you have to keep it brief. Acha. What is AI? AI is the cumulative knowledge of humans to date in a summarized form, in a very articulated, specific, जो आपको चीज़ चाहिए, without going through all the garbage. What makes, again 30 seconds से ऊपर हो रहा है, Google में और chat GPT में फ़र्क क्या है? आपको पेज बाय पेज या लिंक बाय लिंक देखना ही नहीं है. It's specific, it serves a need, boom, finished. That's what it is, right? So it is a cumulative knowledge of what we know till to date. And it is it's a predictor of what you might need. आपको अगर आलू सालन पसंद है तो probably, आलू गोश्त पसंद है तो शायद आपको शब्देग भी पसंद आए, शायद आपको बिरयानी भी पसंद आ जाए. बट अगर आपको सुशी पसंद है तो शायद आपको आलू सालन ना पसंद आए. So it's predicting what you would want also, based on the information it has. My first experience with ChatGPT was कि मैं ऑफिस से घर गया हूँ, अब वो बैठे खाने की टेबल में मेरे कज़न के साथ, एंड लाइक फ़ोन निकालो, ये ChatGPT लिखो. मैंने कहा ये क्या, पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, सी चीज़ें हैं. ओपन एआई का तो नाम सुना हुआ था, इलॉन मस्क की वजह से, उसको तो फॉलो करते हैं. तो उस वक्त बैठे हैं, इज़ लाइक उससे बोलो गाना लिखे. क्या बोल रहे हैं, गूगल सर्च कर लेता हूँ उससे अच्छा. लेकिन उससे बोलो गाना लिखे तुम्हारे ऊपर और उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दो कि क्या करते हो तुम, क्या नहीं करते. उसने गाना लिख दिया, एंड आई जॉ ड्रॉप्ड. क्या, फिर उसको अगला काम दिया, फिर उसको अगला काम दिया, फिर उससे रिसर्च कराई. वो 1 घंटे में हमने जितनी नॉलेज गैदर कर ली थी, चल हम इतने 1 महीने में नहीं कर पाते. मैं उसको 4 लोगों को डेलीगेट करता, मैं खुद बैठता, कंप्यूटर पे बैठता, मेरे चाय आती, मैं उसका इंतजार करता, पानी का इंतजार करता, मैं जो वॉशरूम जा होके आता, मैं कहता एसी खोलो. कंप्यूटर आपका खराब होता है, इंटरनेट आपका बंद होता, के इलेक्ट्रिक आपको तंग करता. मतलब ऑल ऑफ दिस, a whole month of work got comprised in an hour. And in that moment, this was start of November. In that moment, मतलब उस वक्त भी समझ नहीं आया था हुआ क्या, तो उसको इग्नोर कर दिया. मैंने भी नहीं चलाया ChatGPT. ठीक है. मैंने भी 2 महीने तक तो मैंने भी नहीं चलाया. आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी अकल आने लगी, लोगों से सुनना, अब्बू से ही सुनना, क्योंकि मेरे अब्बू, I've been blessed to be living in a house with him. I think what a person. He one of the brilliant minds always of advocating what's new and what's actually going to be happening. And उनसे सुन के I was like, चलो और लोगों को बताए थे, मतलब मैं तो चला ही ना, और लोगों को चलवाए थे. क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही करते हैं ना, कि हम शायद अपना रोड साफ ना रखें, अपनी गली साफ ना रखें, दूसरी गली गंदी होगी उसमें कीड़े निकाल देंगे. तो I'd be going up to other people and like, यार आप ये काम करो, ChatGPT आपको रिप्लेस कर दिया, ये लो ऐसे ट्राई करो.
उनको ट्राई कराने के चक्कर में मैंने चला ली. अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरा भी it was more of fun and games initially. Yeah, very cool. हाँ, पाकिस्तान के बारे में, इकोनॉमी के बारे में रैप सॉन्ग लिख दो. हाँ. और इस तरह के जो है ना वो फजूल प्रॉम्प्ट्स. बट नाउ फ्रॉम emails to me giving assignment, I think पेरेंट्स के लिए बेहतरीन चीज़ है. आप पूरे टेस्ट पेपर, मतलब राइट नाउ इट्स एग्जाम शेड्यूल राइट नाउ, अभी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एग्जाम्स हो रहे हैं यार. आप पेपर्स बना कर दें, आप MCQs के पेपर्स बनाएं, माँ बाप वो आंसर भी आपको बना कर देगा, आप दें अपने बच्चों को. इट्स अ ब्रिलियंट टूल. बट यू नो as a human we are lethargic, right? We are very lethargic, we are very lazy generally, not all of us but most of us are lazy. This is the brilliant part of tools like AI, which would give you those results that you want. So मैं पिछले 2-3 महीने से बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ. और आजकल मैं जो है ना वो अपने आप को हार्ड रीसेट कर रहा हूँ. हार्ड रीसेट इसलिए कर रहा हूँ, टू बी in this industry you need to unlearn what you learned. In early 2005-2006 जब मैं कॉर्पोरेट में था और हम एक टेलीविजन ऐड बनाते थे, so no, this was pre-digital era. हम टेलीविजन ऐड बनाते थे तो उस टेलीविजन ऐड वाज अ बिग डील. रमज़ान की होती थी. We would make a television ad and this was a big deal. Why was it a big deal? Because we would choose the location, we would choose the actors. हम लोग स्टोरी बोर्ड बनता था पूरा पेपर में. एक विजुअल एक एजेंसी में बंदा होता था जो ड्राइंग्स करता था. ड्राइंग करके फ्रेम बाय फ्रेम वो बनाता था. उसके बाद कैमराज होते थे, वो रिकॉर्डिंग होती थी, उससे पहले प्री प्रोडक्शन होती थी, सारी चीज़ होती थी. 4 महीने वो ऐड बनता था और भाई वाओ, ब्रिलियंट. You're right. It would take a freaking long 4 to 6 months to make a TVC and to run it. ठीक है? This is 2005. Now comes social media, which I was very excited about, where you would churn out content, and initially that content would have a life of days. ठीक है, दिन भी मैं बहुत कह रहा हूँ. And then it would be a few hours, 24 hours, and then you would have, अगर आप ट्विटर में ट्रेंड कर रहे हैं एक दिन के लिए तो आप वायरल सेंसेशन है, क्योंकि अगले दिन कुछ और होने वाला है. सही है. And then you would have content which is much more smaller. So from a 30-second ad which was always on the television screen to moving towards smaller content and to digital. हमारा क्लाइंट आता था, कहता वायरल कर दो. क्या वायरल कर दो यार? वायरल करने के लिए आप कंटेंट बनाते हो एक स्पेसिफिक अपने मतलब का ब्रांडेड कंटेंट, वो वायरल नहीं होता. वायरलिटी के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सो कमिंग बैक, सो द what I'm trying to say is from a TVC to smaller pieces of content to then Shutterstock and stock images coming up, where the designer would take an image, put it in a Photoshop or Illustrator, add a title, give it to a community manager, post it on Facebook, do it day in day out. He can pay $250 odd to Shutterstock. Now coming to a world of ChatGPT, of Midjourney, of OpenGPT, where you don't even need a stock library. You don't. You can actually take a brief from the client. ठीक है? Have ChatGPT as a visualizer or a UI expert. Have him as a content copywriter. Have him as a
यू नो वीडियो एडिटर, आप सारे वो काम करा करके गिव इट prompts to the likes of Midjourney and get outputs. You don't need a talent agency because वो आप उसको खुद बता सकते हैं यार कि मुझे एक पाकिस्तानी बच्चा 24 साल का टी शर्ट पहने हुए कराची की सड़कों में जो है ना वो आइसक्रीम खाता हुआ नजर आए, एंड इवेंचुअली आप उस आइसक्रीम को अपने ब्रांड से चेंज कर सकते हैं. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. वो भी वो कर देगा थोड़े दिनों में. वो इट्स गेटिंग बेटर. सो इफ यू यूज वर्जन 3 to version 4 to now version 5, it's only getting better. Of course. It's only getting better. And देखिए ये कहाँ से हुआ? ये एक दिन में तो नहीं हुआ. आपने पिछले 10-20 साल में, 15 साल में आपने डेटा दिया उसको, आपने उसको सोशल मीडिया के थ्रू पिक्चर्स दी हैं, आपने इंस्टाग्राम के थ्रू पिक्चर्स दी हैं, आपने वीडियो दिए हैं, आपने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है विच आर 10 how would I look 10 years from now, how did I look, how do my baby pictures look like. So we've given them data, right? We've given them data. So when that data comes up with all this, that means that a lot of people who have a specific skill set are not needed anymore. आपको एक हैवीवेट डिजाइनर नहीं चाहिए. आपको जो एक डिजाइनर स्टोरी बोर्डिंग करता था, you know, storyboarding is an art. I just got to know about storyboarding because of Himad used to be in production. हाँ, so आप storyboarding करते हैं कि हमें वीडियो बनाने, मैंने कहा वीडियो बना दे, हमने आज तक कभी किया नहीं, तो कि स्टोरी बोर्ड बनाऊंगा फिर बनाऊंगा. स्टोरी बोर्ड क्या होता है? स्टोरी बोर्ड होता है आप मतलब आप फ्रेम बाय फ्रेम, भाई पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, आप ड्राइंग करते थे यार. मतलब you know the biggest problem now is arts will be a fucking commodity. Sorry for profanity. It's going to be a commodity. आर्ट का फॉर्म लेकिन बदल जाएगा. देखिए आर्ट का फॉर्म बदल जाएगा, आर्टिस्ट बदल जाएगा. जब मुझ जैसा बंदा जिसको ना आर्ट्स का पता है, ना लाइंस का पता है, ना पेंट का पता है, कुछ नहीं पता, और मेरे पास इस तरह का टूल आ जाएगा, तो मैं तो उसको कमोडिटाइज कर दूंगा. आप जिसने आर्ट्स पढ़ी भी, लिखी भी, आती भी है, सब कुछ आता है, और आप कहते हैं नहीं यार ये तो मेरी पेंटिंग है, ये एक्स वर्थ है, बिल्कुल वर्थ होगी, बट जब वो कमोडिटाइज हो जाएगी, ठीक है, उसी जिस तरह का कंटेंट, देखिए हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इज कि द कंटेंट इज गोइंग टू कम आउट at a very, 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 very rapid pace. So it's going to be very difficult to find good and bad content. It still is. अभी आप देख लें YouTube में पहले कितना अच्छा content था और अब कितना है. Every person is churning out content. Everything is not great. सही है. There are 24 hours that you have. Netflix used to be great. It's not, because even though it's putting out even more content than it used to, which is used to so much more content coming to us now. It's just it's going to get more na. It's going to get more. In tools से होगा क्या? In tools से हर एक के पास जिसको एक काम में 10 घंटे लगते थे, 5 लगते थे, 4 लगते थे, वो मिनट्स लगेंगे. जब उसको मिनट्स लगेंगे तो और सिर्फ चर्न ही ज्यादा होगा ना. चर्न ज्यादा होगा. जब चर्न ज्यादा होगा, आपके पास टाइम ज्यादा होगा. आप शायद आपके पास 4 रिसोर्सेज की जगह 2 लोगों का काम हो जाएगा आपके पास. So you would be looking at a lot of people not doing the same thing that they were doing. So you mentioned ke every 2 years you'd be rethinking ke ये चीज मैंने अगले 2 साल में यहीं रहना है या आगे बढ़ना है.
2023 शुरू हुआ तो आपने कहा कि हार्ड रीसेट हो गया, एंड देन जेन्युइनली हार्ड रीसेट हो गया, बिकॉज एवरी फॉर्म ऑफ थिंकिंग दिमाग वाला काम जो हम करते थे तो खत्म, नॉट खत्म, बट अब हमारी जो थिंकिंग है, it used to be a saying that you're only limited to what you can imagine. Right. Now AI actually gave you the tool in your pocket which will fulfill that. Right. And it started in October 2022. So October 2022 was the new era that started. Right. And now designing a cup, I wouldn't be like, oh, I have to do a market survey. I just go on the AI software, which I was also telling you about. Things which are changing so rapidly, सबको उसके बारे में पता भी नहीं चलता कि ये कप शायद इस तरह का ना हो. अब हो सकता है कल से कप्स जो हैं वो ट्रायंगल में आने लगे. Trends, if things are trending every day, trends are changing every day. Trends might be changing every 10 minutes in the next 2 years. They are. देखिए, so what we really need to focus on is as humans we need to be critical thinkers. So that's where I was coming. You live in the Pakistani market. Let's focus on the Pakistani market for now, ना. चलो पाकिस्तानी इंडियन, मतलब क्योंकि हम एक ही लोग हैं. Let's talk about South Asian. देखें कि अभी देखिए 2 मिलियन है. एटलीस्ट 10 से 50 मिलियन तो खैर कहीं नहीं कहीं टेक में जॉब्स जो हैं. 7 मिलियन तो हम पाकिस्तान में क्लेम करते हैं ना, इंडिया में उसी रेशो से लगा ले. ये वाली जॉब्स जो हैं ये दिख रहा है, लिटरली आंखों के सामने है कि ये गई. और ये लोग अपने आप को, इनके पास शायद वो मेंटल कैपेसिटी अभी नहीं है, या इनके अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला एलिमेंट नहीं है. ये लोग वर्चुअल असिस्टेंट वाले, ये लोग वो लोग हैं जो कैनवा पे बैठ के पोस्टर रीडिज़ाइन करने वाले, ये रेपिटेटिव टास्क वाले लोग हैं. ये सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी की तरह कर रहे हैं. हाँ, हालांकि टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने लोकेशन बदल ली. मैं आपको so that's a great question, right? तो उनका क्या होगा, क्योंकि ये भिखारी वाला बन जाएंगे. मैं आपको बताता हूँ. We as a nation focus on the low hanging fruit. या ठीक है, वो आप टेक्सटाइल उठा के देख लें, वो आप लेदर उठा के देख लें. हम कहते हैं हमें जो है ना वो आसान काम चाहिए. यार हमसे टावल बनवा लो, बेसिक, बहुत अच्छा बना देंगे. धागा बना लो यार. धागा तो अब नहीं बना रहे हम उस काबिल भी नहीं रहे. बट हम जो है ना वो हमसे रॉ मटेरियल ले लो यार. H&M तुम बना लो. H&M हमसे वो H&M वाली स्टोर नहीं खुलवा सकते. सही बात है. ठीक है, हम नेक्स्ट नहीं खोल सकते, हम 9 West जैसा ब्रांड नहीं खड़ा कर सकते. We'll do the labor intensive doggy work because that's what we are capable of, and unfortunately that's the labor that we have, right? हमने वो काम करा है. टेक्नोलॉजी में भी एग्जैक्टली यही है. हम कहते हैं लोगों से अपवर्क पे चले जाओ और $500 कमा लो. ब्रिलियंट. आज के टाइम पे $500 फॉर एन एवरेज पाकिस्तानी इज ग्रेट. इट डज चेंज देयर livelihood. I'm not denying that. No. However, the mission of our foundation is also कि जी पाकिस्तान के अंदर पावर्टी खत्म करनी है by making $500 the minimum wage. But we need to understand कि is that skill even needed in the next 2 years? आपको क्या Canva, Guy Kawasaki, don't you think he will say, and they are working on it, don't you think they'll have AI tools where you just type and the design would show up and they would say कि यार इसको जो है ना Facebook post भी बना दो, Instagram post भी बना दो, ये सारी. देखिए, you need to understand, right? Content जितनी जल्दी churn हो रहा है उतनी जल्दी वो meaningless भी हो रहा है. आज की मेरी एक Facebook post का वो रीच नहीं है जो 2 साल पहले थी, जो 4 साल पहले थी, जो 10 साल पहले थी. Until unless you pay to play. Yeah. So these are all these are all media companies now. So you need आप जितना content बनाएंगे, यार content बना लो, free में बना लो content. पैसे दो advertising के. So the money they want to make is on advertising.
वो तो धंधा में है ना. The money they want to make is on eyeballs. So what's going to happen is, unfortunately, जितने भी लोग हैं जो अभी भी समझते हैं कि नहीं यार, हम जो है ना वो लोएस्ट स्किल ऑफ रेट में बैठे हैं और हम लोएस्ट ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ पे लेबर चीप है, बिल्कुल चीप है, पर उस लेबर की ज़रूरत होगी तब आप कुछ काम कराओगे ना. आपको अगर आज के टाइम पे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द वेबसाइट, देयर इज अ वेबसाइट which can actually make your whole website for you on a matter of clicks without any code. There's one called God Mode. God Mode. There's another one. So there are lots of them, and they're coming at a very, very rapid pace. So the point is that we really need to change the game. As an industry, we really need to focus on products and research. At universities and as education institutes, they need to focus on research. No one does research. I'll give you an example. मेरी भी बेटी का जो है वो एडमिशन हुआ टॉप स्कूल्स इन कराची में, नॉट नेमिंग द स्कूल. ओरिएंटेशन हुई, प्ले ग्रुप में था. बट आई आस्क्ड द स्कूल प्रिंसिपल, आई सेड, what are your thoughts on ChatGPT and AI and ML and Midjourney? How do you see it going? Are these part of the curriculum? But unfortunately, हम जो है ना वो, we have a very ostrich mindset. हम बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं. हम कहते हैं नहीं यार कुछ नहीं होगा और हम ये इसको हाथ नहीं लगा रहे, ये तो जो है ना हमारा धंधा बंद कर देगा. They're like, no, we're not going to do it. We don't want anything with it. The education, it needs to be from the grassroots level. Education institutes really need to change how we teach things across the board. It needs to be more experiential. मैं आपसे एक अगर सवाल पूछूं, 1 मीटर कितना होता है, आप बताएं मुझे. 100 सेंटीमीटर. मैं तो आपसे ये पूछा ही, कितना होता है, हाथ से देख बताएं. So a lot of people can't do that. A lot of people can't do that because they don't understand कि 1 मीटर जो है वो इतना होता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है ना. So for us to really do a hard reset, it needs to be on our education side. It needs to be in our university end, and we need to tell our kids जो Upwork में और जो Fiverr में करें, हाँ यार ये करो, it's very good, Amazon VA बनो. उसका next step क्या है, उसके अगले का उसका next step क्या है. These jobs as we know it get obsolete in मतलब 3-4 साल 5 साल अब तो साल भी नहीं. आप देखें ना, the hottest jobs in 2015, 16, 17 was social media manager. हाँ. You don't necessarily need them now. No. सही है. एक एडिटर या बहुत सारी चीजें जो है, आप वीडियो डालेंगे वो एडिट कर देगा. ऐसे आप मतलब Netflix used to hire a lot of people for transcription. There's no need. There's zero need now. So we need to understand that this whole audience that's there, and हम जो कहते हैं हमारा youth जो है ना वो हमारी backbone बनेगा. It needs to have a direction. This is a stepping stone, but we need to see where the world is going. The world is moving towards people who have very high cognitive skills, who have very high critical thinking skills, who have very high interpersonal skills, and who have very high skills of talking to AI. I don't know if you know, prompt engineering are jobs which are paid up to $300,000 a year. So we really need to
change the mindset of what people are doing right now. Or and we really need to, you know, focus के इससे होने क्या वाला है. Who do you think is... So we do need a... I don't think we need a game plan. Game plan भी AI दे देगा. हमें सिर्फ बताया कि execute इसको कैसे करें. Because बहुत सारे लोग हैं, हद से ज़्यादा लोग हैं. One medium to get to them is this. देखिए मैं आपको बताऊं, जो एक चीज मुझे जो मुझे वो करती है, उसमें आपको क्या समझा? हाँ वही ना. The worst part is कि हमने, देखिए let's forget English. अगर हम सिर्फ अपनी लैंग्वेजेस में पाकिस्तान में काम कर लेना, उर्दू, पंजाबी, क्या काम करें? सराइकी, आप चैट जीपीटी लें, आप उसको व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट करें, आप उसमें स्पेसिफिक जो है ना प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दें जो किसानों के लिए अलग हों, जो मदर्स के लिए अलग हों. आप यहाँ पे you know, you start working with NGOs, you start, so everyone has a mobile, right? इस पे कोई डाउट नहीं है. Everyone has a data package, bare minimum, जो इस वक्त टिकटॉक के लिए यूज होता है. वो तो है ना. आप देखें व्हाट्सएप सबके पास है, 170 मिलियन के पास स्मार्टफोन है. उसमें व्हाट्सएप भी है, उसमें टिकटॉक भी है, उसमें इंटरनेट तो है ही. फवाद भाई, आवाम बहुत है और आवाम के नंबर स्टेटिस्टिक्स पे जाएं तो 250 मिलियन लोग हैं, 170 मिलियन स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास टिकटॉक है. और व्हाट्सएप पे चैटबॉट आ गया और सबके पास उसको आई वुड से कि अभी कल ही मैं चला रहा था तो अगले हफ्ते तक आई एम श्योर कोई ना कोई व्हाट्सएप पे कॉलिंग बॉट भी आ जाएगा. हम लोग बना रहे हैं जिसमें आप कॉल करें और लड़की से गप्पे लगाएं एंड यू कैन टेल इट टू डू अ टास्क एंड इट टेल यू ऑल द इन्फॉर्मेशन. सही ना. तो वो ऑलरेडी है, मेरे फ़ोन में भी अभी डला हुआ है. तो इसको क्या कॉल आनी तो ये भी आप बातें कर सकते हैं इससे. अच्छा, हाँ नंबर दी. पूछो कुछ. गुड, हाउ आर यू? आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसको यहाँ रखे रहते हैं, कुछ भी सवाल हो, हे एनी हाउ डू आई डू दिस. कल उसने स्ट्रैटेजी बनाई है, हमारे लाइफ प्लान बनाया हमारे सीनियर सेल्समैन का ऑफिस में. अच्छा, उससे पूछिए उसको खाना क्या है, उसका पैशन क्या है, उसको करना क्या है जिंदगी में. वो बताने के लिए उसने पहले उससे सारी सी चीजें पूछी. हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा पूछने का. हम तो कहते यार अच्छा तुम्हें काम क्या करना है, तो फैमिली के साथ कहाँ होना चाहते हो, ये थोड़ी पूछा इसने तो कोर चीजें एक्चुअल पूछी जो इसके पास accumulative डेटा है दुनिया भर का. Having this, what would you just recommend? क्योंकि in easy words, which a typical South Asian would understand, कोई 2 टिप्स दें, 2 एडवाइसेस दें आपके ख्याल से जो उनको एक्चुअली बेसिक पाथ पे चढ़ा दें. क्योंकि देखें सबसे शुरू में बंदा, आपने भी कहा था कि आपने इंटरनेट अडॉप्ट करते ही क्या चीज़ इस्तेमाल करी जो हर एक करता है. सिमिलरली इसमें भी हमें इंटरटेनमेंट पहले देनी होगी. तो एनी बाजी को कॉल करके हमें पहले अपना एक गाना बनवाना है उससे. तो how do you see this? What's the step 1 for these people? Because they're not starting. Once you start, do you know Telecard and Telefilm was there? There's Telephone, yes. So I have seen that. But देखिए ना, mass branding हम गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं कर सकते, प्राइवेट लेवल पे कर सकते. गवर्नमेंट isn't supporting. आप खाने की, पाकिस्तानी खाने की रेसिपीज शुरू करवा. जैसे मतलब what you're asking कि मैं कह रहा हूँ कि टंडो एलआर में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको उर्दू आती है और ये तो उर्दू समझ लेता है. ठीक है, उसको हम कह रहे हैं देख भाई तेरी जॉब जाने वाली है, या तू स्केल नहीं करेगा तो एग्रीटेक कंपनीज भी आ रही हैं अभी नहीं तो 5 साल के बाद उनका भी सच में गड़बड़ होने वाली है, जो हमारा टिपिकल हारी है या एग्रीकल्चर. या दूसरा बंदा है जो करियाना स्टोर चला रहा है, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? उनके लिए स्टेप 1 क्या है? क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप नंबर अपने पास डाल दिया, एक लड़की के पीछे उस पर थी, उन्होंने हेलो भेज दिया, उसने बातचीत भी शुरू कर ली. अब करेगा करेगा तो वही जो उसको पता है. सोच रहे हैं तो उसको बताएं ऐसा जो उसके, क्योंकि टिकटॉक अडॉप्शन कब आई? टिकटॉक अडॉप्शन उस वक्त आई जब हमने ऐसा रिलेटेबल कंटेंट बना. टिकटॉक सोच भी नहीं सकता था कि जैसा कंटेंट वो अमेरिका में बनाता है उससे हट के कोई कंटेंट चल भी सकता है. लेकिन पाकिस्तान में कैसा कंटेंट होता है, मतलब देखा नहीं जाता यार, है क्या ये सेंस नहीं बनती, लेकिन चल रहा है. देखिए
because you are also having a pain point in your heart for the masses, but we need to think like the masses to actually give them a word of advice. Yeah, that's a very good question. I honestly don't have an answer to it. चले masses को छोड़ें. हाँ. मैं तो कहूँगा आपकी बेटी जो इंग्लिश जानती है, जो एसी में बैठती है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास तो मैक पे है, उसके पास चलो वो नहीं है वीगो टेल का फोन, उसके पास आईफोन है, वो क्या करे, वो कहाँ शुरू करे, क्योंकि हमें वो आवाम भी नहीं शुरू करे. देखिए वो बच्चा जो है ना वो अपना रास्ता निकाल लेगा. Time, we're missing out. What's happening is when the technology revolution came, you were like, okay, our industries will flourish. They will. When the e-commerce revolution came 2 years ago, Sunny Ali और सबने जो किया, you were like, यार पाकिस्तान की इंडस्ट्री अब छा जाएगी. क्यों? क्योंकि अब प्राइवेट लेबल लोगों को समझ आ जाएगा, ब्रांड बिल्डिंग लोगों को समझ आ जाएगी, और हमारे ब्रांड नहीं किया. क्योंकि टेक सब देखिए, as easy as it may sound or look, it's not that easy. That's number one. Number two, I think, so there are two sets of audiences. हमारे मुल्क में 2 sets of audiences है. Let's look at the youth. कुछ और को नहीं देखते. एक audience है जो आज का बच्चा है, जो एजुकेटेड है, अच्छे वेल टू डू स्कूल में जाता है, सारी चीज़ें करता है. वो किस तरह अडॉप्ट करे? आई थिंक दे start using these tools as an added skill set to what they are already learning. यार ये हमने स्कूल में सीखा, टीचर ने ये बताया, let's see what this tells us and let's accumulate our knowledge. That's one thing. वो स्कूल में है, वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि देखिए हार्ड ये तो नहीं होगा कि कल AI से सारे स्कूल बंद हो जाएंगे या यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगे. The stakes are much higher. हाँ, it's too slow to make that happen. हमने कोविड में देखा था, कोविड में ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बिल्कुल सब बंद हो गया. बंद हुआ, रिमोट जॉब्स चेंज हो गई, वो अंडरस्टैंडिंग आ गई, बट ऑफिसेस बंद नहीं हुए. सही. The other audience, so this audience will embrace AI, learn AI, understand, but focus more on the cognitive side of things. Now you're looking at a different audience which has a WhatsApp, which has TikTok, and let's assume for a moment that WhatsApp ही जो है ना वो एक चैट जीपीटी से लिंक हो जाता है. 6 महीने की बात है. हाँ, 6 महीने आ जाएगा. वो आ जाएगा. उसमें एक कोई चैटबॉट होएगा जिससे आप हर चीज पूछेंगे. ऐसे ही. अब आप क्या पूछेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. हमारे यहाँ ऑडियंस क्या पूछेगी का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पूछ सकते हैं. आई थिंक व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज कि क्या सवाल पूछो. Yes, that's my question to you. कि what would you recommend them to ask to make them feel empowered that they can ask anything, they can actually ask anything. एक किसान पूछे यार मैंने ये फसल लगाता हूँ, इसकी जगह मैं क्या फसल लगाऊं. And then now I could send pictures also. मुझे बताओ इंडिया में. हाँ, उसमें अब पिक्चर्स आ गई है. हाँ. So you send pictures, it's gonna identify what's there and then it's gonna give you an answer. So those are, मगर उसके लिए जो है ना, उसके लिए I feel एक what you're saying is a private idara. I feel this needs to be done at a government level. It cannot, but हाँ नहीं हो सकता. भूल जाए ना, गवर्नमेंट भूल जाए, एग्जिस्ट ही नहीं करती पाकिस्तान में. आपने अगर प्राइवेट उसमें भी करना है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होने में 6 महीने लगेंगे, और 6 महीने में AI चेंज हो चुकी. आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज, देखिए इस वक्त लेट्स लुक एट व्हाट दे हैव टिकटॉक एंड यूट्यूब. या आप उसमें सिर्फ जो है ना वो 30 सेकंड का कंटेंट डालना शुरू कर दें कि तुम ये भी कर सकते हो. आप कौन है? हाँ, आप कौन है? Anyone. Do you want to start? I don't know, maybe. So you just put in like 30 seconds of content, 1 minute of content के मुझको ये बताओ गाय दूध कितना कैसे ज्यादा दे सकती है. सही है. मेरी फसल की यील्ड कैसे ज्यादा हो सकती है. ठीक है. मैं किस तरह इसको ज्यादा, so everything related to efficiency and effectiveness, that's what एक अनपढ़ आदमी भी अगर वो कारोबारी हो या व्यापारी हो, he understands effectiveness and efficiency.
उसको चाहे कुछ भी नहीं आता हो दुनिया का, उसके बाद मोबाइल हो और उसके बाद अगर वो ज़बान समझ में आ जाए, he can do that. So I think that's what we need to kind of focus on. I think आप AI से और अपनी लैंग्वेज से अपने उन लोगों को अपलिफ्ट करके नॉलेज एम्पावर कर दें, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर दें. दैट्स द लीस्ट यू कैन डू. बाकी तो ओपन एआई के सीईओ को नहीं पता कि व्हाट्स दिस गोइंग टू टर्न इनटू. सो बट आई थिंक क्रेजी टाइम्स, craziest times ever where it's true. हमारे पास आई थिंक कुदरत की सबसे बड़ी नेमत हमें हमारी जनरेशन को मिली है. और अब बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में पूछा जाएगा, आपकी दौलत के बारे में, आपके वक्त के बारे में. आई थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ इट कि आपने इस टूल को, हथौड़ा अगर आपके हाथ में हो और आप काम ना कर रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा मैं तुम्हें टूल दिया कि तुम पैसे कमा सको और तुमने नहीं कमाया. तो सिमिलरली अगर हमें ये टूल दिया है which has the capabilities to answer by looking at all of your scenario, that how will you become a millionaire, and you're not becoming a millionaire, now that's on you and that's on us. If we've given up ourselves, if we've gotten up, I mean we didn't even ask for it, we got it. So if we have this power कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम कुछ भी करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, चलो भाई कोशिश तो कर लो ना. कोशिश करना आपके हाथ में. उसका गीता है, कौन सी बुक है जो हिंदुइज्म की है, उसमें एक कोट है कि our duty is to keep on trying. Our duty is not to get the result. So we have to keep on making an effort. And this is 5,000 साल पुराना कोट है, वो आज तक सही है क्योंकि हमारा काम है काम करते रहना, और जो हमें टूल दिया जाए उसको अडॉप्ट करें, उस पर काम करें. रिजल्ट तो नहीं, रिजल्ट तो देखिए अल्लाह ताला के हाथ में. आपने इवन यू सेड कि जी मैंने तो बस ऐप वेबसाइट बना के डाल दी, वो कैसे उसमें ऑर्डर्स आ गए, क्या हुआ, कैसे उसमें रेवेन्यू आना शुरू हो गया, आपको पता भी नहीं चला. Thank you so much for your time. Thank you for your time. And it was an honor to have you. It was a great talk and I'm looking forward to what's coming next. कौन सी सीरीज का एक डायलॉग है, बी अफ्रेड बी वेरी अफ्रेड, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम. अभी गूगल अभी ऐसे पूछते हैं. Will it be the Terminator or what would it be? तो द फ्लाई का एक कोट है, हमने 10 सेकंड में आइडेंटिफाई कर लिया. आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से क्या करना है 10 सेकंड में. शुक्रिया देखने के लिए. और we can only hope for the best, and we can only hope for not missing out on this boat that we have, this gold mine that we have been blessed with, and we have to use it properly. Thank you so much. Thank you. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.